So very good afternoon to all and welcome all to today's session. My name is Rohit and I will be your co-host for this session. And I'm having with me Mr. Karan Pai, who is having a vast experience into the capital market, that's into the derivatives, equity and commodity and currency. He'll be assisting you on understanding about the support and decisions about the today's expiry, followed by the option chain and the trend lines that what is the कि आज क्या charts basically दिखा रहा है हमको and how we are predicting it for the Nifty expiry. Followed by, I have shared the link on the chat box that this Friday we are having the session on the advanced option strategy. That if you want to understand about the straddles, triangles, condor, and the calendar spread strategies. So ये सारी strategies हम लोग ये Friday को cover करने वाले हैं at 2:30 p.m. And those who have missed our this previous session, they can go into our YouTube channel and you can attend that session first. So this will be the session second that will be conducted on this Friday. Now with this, I'll hand over the session to Mr. Karan Pai, who will going to give you the view on the FINNIFTY expiry. Karan, all over to you. Thank you, Rohit. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us this afternoon. And हमेशा की तरह अभी आज हम लोग फिर निफ्टी डिस्कस करेंगे एंड हमेशा की तरह मैं चाहूंगा कि आप लोग सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस जो है वो चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए सो दैट वी नो दैट वी आर हैविंग अ डायलॉग एंड वी बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर वी बोथ आर ऑन द सेम पेज. Everyone, thank you for joining us this. Yeah. So everybody, yeah, please start typing in your supports and resistances in the chat box. So those who are attending this session from our YouTube channel, you can also put your this support and resistance in the live chat box. In the meanwhile, what I would explain is what my chart will always have, and the platform that I'm using is TradingView. So मेरा चार्ट हमेशा ही सिंपल रहता है. I look for exponential moving averages, three of those actually, and just go to settings, switch over to 5. And 21. Now, why these moving averages? Why three moving averages? For starters, कि एक जो मेरा मूविंग एवरेज है जो 21 पीरियड मूविंग एवरेज है वो मुझे ओवरऑल ट्रेंड बता देगा कि व्हाट इज द अंडरलाइंग ट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड जो उसके ऊपर वाले जो भी शॉर्टर टाइम फ्रेम वाले मूविंग एवरेजेस है दैट इज 5 and 13 दे आर बेसिकली माय सिग्नल लाइंस. नाउ एक चीज आपको बहुत स्पेसिफिकली ध्यान में रखनी है कि नन ऑफ दीज आर एक्चुअली ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग. आपको चीजें एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी ओनली देन you will be comfortable with the periodicity of the moving averages that you have to look for. Okay, so looks like we have our first input and 23,440 to 23,500. Okay, that seems to be the support level. Support is 23,550, resistance is 23,760. All right, on the basis of Fibonacci. Okay, ठीक है, thank you Sunil ji. um okay, so we'll go out, we'll start on with the webinar. So अभी सबसे पहले तो मैं चार्ट पर ये देखना चाहूंगा कि just give me a second. ओके, सॉरी अबाउट दैट. सो विल गेट स्टार्टेड विद द वेबिनार एंड सबसे पहले तो चार्ट पर मुझे ये देखना है कि ओवरऑल ट्रेंड इसका कैसा है. एंड अगर आप देख सकते हो तो ये जो 2 दिन पहले या कल के सेशन में जो फॉल आया था दैट हैज हॉल्टेड समवेयर अराउंड 21 डे मूविंग एवरेज एंड अभी प्राइस जो है दैट इज इन बिटवीन 13 एंड 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज.
सो एक ओवरऑल मुझे एक अंदाजा मिल जाएगा बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन ऑफ द पास्ट 3 सेशंस कि कहीं ना कहीं देयर इज अ कंसोलिडेशन इन्वॉल्वड इन द इन फिन निफ्टी. ठीक है, then I'll go on to first the 1 hour chart to see what is happening. This has been a smooth up move and then वहां से हमें एक थोड़ा डिप दिखाई दिया एंड उसके बाद अगर आप देखोगे मैंने एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनाया. दिस ऑन द 1 hour chart might look a bit steep, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे इट हैज बीन ऑनर्ड, दिस लेवल लाइन हैज बीन ऑनर्ड. सो समवेयर अराउंड 23,600 के आसपास जो है ये थोड़ा मेक और ब्रेक पॉइंट हो जाएगा फॉर द फिन निफ्टी फॉर टुडे. देन आई गो ऑन टू माय इंट्राडे चार्ट्स. 15 मिनट चार्ट्स अगर मैं देखूं तो कल शाम से एक फॉल स्टार्ट हुआ था, सॉरी फ्राइडे सुबह से एक फॉल स्टार्ट हुआ था एंड दैट सीम्स टू हैव कम टू अ हॉल्ट फॉर द टाइम बीइंग. नाउ आज के दिन में अगर आपने हमारे मॉर्निंग नोट वगैरह पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि ग्लोबल मार्केट जो था कल के दिन में थोड़ा पॉजिटिव था एंड एशियन क्यूज भी जो थे थोड़े पॉजिटिव थे. सो दैट इज व्हाई वी सॉ अ पॉजिटिव ओपनिंग इन द इंडियन मार्केट्स एज वेल. सो उसके बाद से अगर आप देखो फर्स्ट 3 कैंडल्स में देयर वाज अ बिट ऑफ अ सेल ऑफ एंड फिर निफ्टी का एक लो बन गया दैट वाज अराउंड 23,559. सो आई राउंडेड ऑफ टू 23,500 एंड वहां से देयर इज बीन एन अपवर्ड ड्रिफ्ट. बट अगर मैं ओवरऑल टेक्निकली इसे देखूं तो देयर आर सम हर्डल्स अराउंड द 23,600 650 लेवल, सॉरी 650 700 लेवल. अगर वो लेवल निकलता है then the next level that I could probably look at is 23,750 23,780. And on the downside, the key support, according to the chart, would be placed somewhere around today's low, that is 23,500, which we rounded off. 23,500 के आसपास जो है थोड़ा एक सपोर्ट आते हुए दिखाई देगा एंड अगेन दैट आल्सो coincides with multiple touch points here. So 23,500 will be the key level to watch for and below that multiple supports might open up, one of which is 23,300. सो ब्रॉडली हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया कि हाउ आर चार्ट लुक्स लाइक एंड ऑन द डेली चार्ट आई जस्ट प्लॉट इन अ फिबोनाची लेवल एंड सी व्हाट इज द सिचुएशन. ओके, सो इंटरेस्टिंगली अगर मैं ये प्रीवियस स्विंग जो था, अप मूव जो था, दैट इज फ्रॉम 14 अगस्त से लेके 3 सितंबर का अगर मैं मूव देखूंगा तो उसके 38.2% के आसपास से कल मार्केट ने सपोर्ट लिया था, फिर निफ्टी ने सपोर्ट लिया था. सो जो 23,400 का जो लेवल था, जैसे किसी ने चैट में मेंशन किया था, वो जो है थोड़ा क्रूशियल लेवल बन जाता है यहाँ पे. So all in all, now I know what the broader bias is and I'll now go to the NSE website. यहाँ पर जाकर I'll type in FINNIFTY. निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इसे ओपन हो जाना चाहिए एंड जस्ट गो ऑन टू ऑप्शन चेन. ऑप्शन चेन में जाते ही बाय डिफॉल्ट आपको करंट एक्सपायरी देगा. आई जस्ट जूम आउट अ बिट इफ आई कैन डू दैट. या सो एंड देन आई स्क्रॉल टू फाइंड द कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन आईटीएम के पास आपको मिल रहा है एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो देयर इज अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन एन आईटीएम एंड ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट. जो एक हाईलाइटेड एरिया है, जो पिंकिश ग्रेश जो कलर है, दैट इज योर आईटीएम एंड जो व्हाइट है, प्लेन व्हाइट है, दैट इज योर ओटीएम. एंड अगर yeah, just give me a second. Yeah, sorry about that. सो जब मैं कंसंट्रेशन देखूंगा सो मुझे दिख रहा है कि अराउंड दी एटीएम इज वेयर वी आर वेयर देयर विल बी कंसंट्रेशन इन जनरल. बट अगर मैं ओटीएम्स की तरफ चाहूँ तो 23,700 फॉलोड बाय 23,800, ये जो लेवल्स है यहाँ पे कॉल ऑप्शंस में थोड़ा हमें राइटिंग दिखाई दे रहा है. आई होप इट इज विजिबल एंड अगर विजिबल नहीं है तो आपको स्क्रीन पर थोड़ा जूम इन ऑप्शंस आ जाएंगे, वहां पे आप क्लिक कर लीजिए, आपका स्क्रीन जो है थोड़ा जूम इन हो जाएगा. एंड पुट्स की अगर मैं बात करूं सो आई सी कंसंट्रेशन अराउंड 23,600, मेजर कंसंट्रेशन अराउंड 23,500. सो चार्ट्स पे जो हम लोग को लेवल दिखे थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रीएनफोर्स होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं. सो ब्रॉडर रेंज जो होगा फिर निफ्टी का, दैट सीम्स टू बी समवेयर इन बिटवीन 23,800 23,700 ऑन द अपसाइड
एंड वहीं पे डाउन साइड जो है 23,500 का प्रॉब्ली लग रहा है कि देयर कुड बी अ सपोर्ट. सो चार्ट जो हम लोग को पहले बता रहा था डेली चार्ट की, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंसोलिडेशन दैट वी माइट सी, आने फॉर द डे वी माइट सी दैट कंटिन्यू अनलेस एंड until major supports or resistances are not broken. So after that, what we can do is come on to see the sectors. Now, sectors I have told you how to look at, and this is some proprietary software that we have internally. And अगर आपको निफ्टी पे देखना है, then what you can do is yeah. Am I audible enough? And in the meanwhile, I would also want to ask you guys, if you have any query, please put in the chat box. So Karan, we are having the query in our YouTube channel that what are the top sectors moving today, and also later on if you can just compare with the Bank Nifty and the FINNIFTY tomorrow expiry. So today is the FINNIFTY expiry and tomorrow is the Bank Nifty expiry. So your view on the this, and Savita Mishra ji ne likha hai that FINNIFTY is on the upper side after some time. So if you can just take the look on this. So I think top sectors you can show it, and then later on you can compare with the FINNIFTY and Bank Nifty, and followed by the charts actually Yeah, trends. Yeah. yeah. So sure, Rohit. So first, we'll take a look at what individual indices are doing. Now, if someone wants to take a plain, I mean, किसी के पास अगर वो, of course, वो software नहीं होगा, and आपको आपके sectors अगर देखने हैं, then my simple advice would be to go on to NSE, click on View All Indices. उसमें आपको सारे indices आ जाएंगे, and then उसको आप CSV में download करके you can simply sort it out. Correct. So, which are the best performers? But because we have the software, I'll simply take a look at this, and मुझे यहाँ पे clearly दिखाई दे रहा है that Nifty Media, Nifty IT, they seem to be the stronger ones today, followed by Nifty Pharma, Nifty Energy. And अगर आप देखोगे breadth जो है वो around 11 gainers है with one declining, and Fin Nifty for the day seems to be a bit underperforming. So अगर आप broadly देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे 12 sectors सेलेक्ट करके रखे हैं विच आर काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू अस. एंड उसमें से अगर आप देखोगे तो निफ्टी फिनेंस जो है आज थोड़ा हमें बॉटम पर आते हुए दिखाई दे रहा है. Now, if you just look at the components in the Nifty Finance, so you see, something like HDFC Life, that seems to be a major laggard today. वहीं पर अगर आप देखोगे something like Kotak Mahindra Bank, HDFC Bank, they seem to be a bit stronger for the day. देन कमिंग ऑन टू अगर निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो आई जस्ट शो यू. हाँ, निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं अगेन, ब्रेथ जो है मतलब नंबर ऑफ एडवांस टू नंबर ऑफ डिक्लाइंस वो काफी tilted है towards the bulls. So there are 35 stocks which are advancing and around 15 stocks that are declining. एंड अगर आप देखोगे गेनर्स जो है आज के दिन में देर इज समथिंग लाइक अ डिवीज लैब, एलटीआई माइंट्री, इनफी, ब्रिटानिया, ये सब जो है दे सीम टू बी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड टुडे. वहीं पर अगर मैं लेगार्ड्स की बात करूं तो समथिंग लाइक एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे जो लेगार्ड्स है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स हैं. So this, I hope, gives you a clarity on what is happening in the sectors, what is happening in the Nifty 50 stocks. Now, coming on to the bank, I'll just run through the Nifty finance chart again. So आज के दिन में there is another interesting observation जो अगर आप कैंडल साइकोलॉजी को अगर आप रीड कर रहे हो, रीड समझ पा रहे हो, देन ऑब्जर्व टुडेज कैंडल, एंड यहाँ पर जो हाई एंड ओपन है वो काइंड ऑफ सिमिलर है, लाइक लिटरली फ्यू पैसे का डिफरेंस है, फ्यू फ्यू 0 पॉइंट सम पॉइंट्स का ही डिफरेंस है. सो अगर आप वो देखोगे एक नेगेटिव साइन जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं बनते हुए हमें दिखाई दे सकता है कि द ओपन इक्वल टू हाई का जो पैटर्न है दैट इज इनवेरिएबली टेकन आउट एज नेगेटिव. So that also, I hope that is what the commenter actually meant when she mentioned that it's at the top range. So I hope वही आप mention कर रहे थे. And to look at the bank nifty, so बैंक निफ्टी का इंडेक्स में अगर देखूं तो इट इज अबव डेली चार्ट पर अगर हम लोग देखेंगे तो
इट इज अबाउट द माई पैरामीटर्स, जो भी मेरे मूविंग एवरेजेस है वो वहां से अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज बिट पॉजिटिव। बट इसमें भी वो एक ओपन इक्वल टू हाई वाला पैटर्न है। सो फॉर द टाइम बीइंग इट इज अ मिक्स बैग, बिकॉज यहाँ पे हमें थोड़ा एक लोअर विक जो है वो दिखाई दे रहा है। नाउ टू अंडरस्टैंड these terminologies, do join us in our tomorrow's webinar, in which we'll be explaining you what is the psychology behind a particular candle formation, wicks क्या होता है, why it is important to look at wicks, or what the wicks tell us about the market. So ये सारी चीजें हम लोग आपको एक ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करेंगे कल के हमारे कैंडल स्टिक्स वाले वेबिनार में। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे इट्स अ बिट मिक्स बैग। मैं मिक्स बैग क्यों बोलूंगा, बिकॉज ये जो लोअर विक है वो कहीं ना कहीं बाइंग इंडिकेट कर रही है, बट एट द सेम टाइम हाई इक्वल टू ओपन इक्वल टू हाई पैटर्न भी इसमें बना हुआ है। सो जब तक अगर समझिए निफ्टी ने सॉरी बैंक निफ्टी ने अगर आज का हाई निकाल दिया, विच इज 51,329, 51,330 राउंड ऑफ करते हैं उसको। एंड बेयर इन माइंड दिस इज ऑल द स्पॉट लेवल्स, आई एम नॉट लुकिंग एट द डेरिवेटिव चार्ट्स, एफएनओ फ्यूचर्स के चार्ट्स नहीं है, ये सारे स्पॉट लेवल है। सो अगर ये लेवल निकल जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें एक तेजी बिल्डअप होने की उम्मीद हम लोग रख सकते हैं। Other than this, anybody has any query? Anybody would like to ask something? Please feel free to put in the chat box. Now we cannot unmute you for obvious reason, because we have many viewers right now, and it will be a chaos. So please chat box में आपकी queries जो भी है आपके chat box में डाल दीजिए please. सो इन द मीनवाइल एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, व्हेन वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट मोमेंटम। सो फिन निफ्टी का अगर आप मोमेंटम बिल्डअप देखोगे, इट इज ऑल्सो शोइंग अ बिट ऑफ एग्जॉशन। इफ यू लुक, दो इट इज अबव द रेफरेंस लाइन, इट इज अबव 50, आई एग्री टू एवरीथिंग, बट अगर आप देखोगे जो ये आज के कैंडल में जो एक सेल ऑफ काइंड ऑफ थिंग आया है फॉर एज ऑफ 12:15, सो वहां पर एक थोड़ा लैक ऑफ मोमेंटम भी वो बता रहा है। सो एंड अगर ऐसे ऐसे सिचुएशन रहते हैं, अगर वो समझे कि 50 के नीचे चला जाए, मतलब वो जो एक मिड पॉइंट लेवल या उसको रेफरेंस लाइन आपको, इट्स अ रिप्लेसेबल वर्ड काइंड ऑफ थिंग है वो, अगर वो ब्रीच करके इफ इट इज शोइंग बेरिश मोमेंटम बिल्ड अप, सो दैट वुड बी अ बिट ऑफ नेगेटिव फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। सी बट वहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे, सो सिंस द पास्ट टू सेशंस, दो द मोमेंटम ऑफ द दो द स्पीड एट विच द मोमेंटम इज बिल्डिंग अप इज काइंड ऑफ स्लो, बट ओवरऑल मोमेंटम भी इसका थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन पे बता रहा है। सो these are a few things that we wanted to mention. Other than this, अगर किसी को कुछ query है, पूछना है, बोलना है, please feel free to put it in the chat box. So Karan, if you can just help us to understand कि आज RSI लेवल क्या है, क्या ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन पे चल रहा है फिर निफ्टी, और इसका इंट्राडे में लेवल्स में अगर मुझे देखना हो तो इंट्राडे में अगर कोई खेलना चाहता है तो इंट्राडे में लेवल्स क्या हो सकता है एग्जैक्टली exactly? और यूट्यूब चैनल से एक क्वेरी था कि दैट वो 23,700 का कॉल होल्ड कर रहे हैं, बट वी कैन नॉट गिव द व्यू ऑन दिस कि दैट क्या रहेगा, बट वी कैन टेल यू द ऑफ कोर्स एज पर द एजुकेशन पर्पस वी कैन टेल यू कि दैट हाँ एग्जैक्टली अभी फिर निफ्टी क्या फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर 1 मिनट का चार्ट अगर आप लगा दे करन, एंड अगर आप बता पाए कि अगर इंट्राडे का मैं कर रहा हूँ तो उस पर क्या ट्रेंड्स फॉलो करूँ, क्योंकि अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि दैट हाँ अभी थोड़ा एक फिर निफ्टी रेंज बाउंड सिचुएशन पे चल रहा है, एंड एक पर्टिकुलर लेवल उसका अभी इसका ब्रेक होता है तभी फिर वो या तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो अगर आप लेवल्स बता पाए कि अपना 1 मिनट या 5 मिनट चार्ट्स में, क्योंकि आज एक्सपायरी है जैसे कि फिर निफ्टी की, तो उस पर एक मीन्स मैं क्या लेवल देख सकता हूँ ट्रेड करने के लिए। श्योर श्योर रोहित। सो वेबिनार के स्टार्ट में ही जब हमने इंट्राडे चार्ट्स देखा था, सो देयर वाज दिस ऑब्जर्वेशन कि एक सुबह के फॉल के बाद इट हैज बीन अ ब्रॉड ड्रिफ्ट अपसाइड।
ठीक है, वहां पे अगर मैं और थोड़ा 5 मिनट्स के चार्ट में अगर मैं और थोड़ा जूम इन करूँ तो ये हर कैंडल पे एक अपर विक बना रहा है। नाउ अपर विक आपको ये बता रहा है कि देयर इज रिजेक्शन कमिंग अराउंड 23,600 स्पॉट, 23,650 स्पॉट लेवल पर। सो जब तक ये 23,600 23,650 डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता कि द चांस ऑफ फिन निफ्टी मूविंग इन अ रेंज इज मच हाई. So again, this is just based on what the charts are showing. Don't take it. इंट्राडे Yeah, में करता हूँ, yeah. ओके ओके। Strictly speaking, intraday because I'm obviously looking at the 5 minutes chart. 5 या 15 minutes में intraday charts देख रहा हूँ, so I'm looking at a trade that I'll square off before the market shuts today. सो अगर किसी को अगर नेक्स्ट वीक का अगर लेना होगा तो वन डे के चार्ट के उस पे जाए क्या एंड देख सकते हैं कि अगर नेक्स्ट वीक अगर मुझे आज कोई अपना कॉल या पुट लेना है फॉर द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी फॉर द फिन निफ्टी देन क्या कर सकते हैं उस पे, लाइक क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा? So अगर मैं 1 week के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो फॉर मी द मेजर सपोर्ट इज गोइंग टू बी द प्रीवियस सेशन लो, करेक्ट, जो अराउंड 23,441 के पास आ रहा है. इफ वी सी अ ब्रेक बिलो दैट we can see it move lower probably towards 23,250 से लेके 23,170 तक, somewhere around that level. So the previous session low जो था that is 23,440, I can round it off to 23,400, तो वो मेरे लिए थोड़ा क्रूशल होगा. एंड वहीं पे ऊपर के लेवल में अगर आप देखोगे तो 23,800 23,850 वहां पर हमें थोड़ा रेजिस्टेंस आते हुए दिखाई देगा, थोड़ा एक hurdle kind of thing आएगा. एंड once that is breached, so we might see it head higher, uh, probably 23,900 24,100 के आसपास. सो अगर करंट देखा जाए तो अपना फिन निफ्टी का एक पर्टिकुलर लेवल है दैट इज 23,600 के आसपास अगर इंट्राडे लेवल्स पे देखा जाए. साइमल्टेनियसली अगर मैं दो अलग और इंडेक्स की बात करूं जो कि है बैंक निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है एंड निफ्टी 50 का. सो बैंक निफ्टी का अभी लाइक मींस अभी जो चल रहा है दैट इज 84 पॉइंट्स ऊपर है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 25-32 पे चल रहा है जो कि कल था अपना 23,800 23,900 के आसपास था. तो आज निफ्टी 50 भी ऊपर है. तो अगर आप जस्ट एक बता पाए कि अपना निफ्टी 50 का क्या लेवल्स रहेगा अगर आज कोई एक अपना पोजिशनल ट्रेड्स करना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर निफ्टी 50 अगर मैं होल्ड करता हूँ तो थीटा यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम देके काम कर जाता है एंड वहां पे हम लोग का लेवल्स खराब हो जाता है. तो व्हाट कैन बी द लेवल्स ऑफ द निफ्टी 50 जो हम लोग का परसों एक्सपायरी रहेगा एंड उसके बेसिस में अगर इफ यू कैन जस्ट टेल अस कि दैट ओके व्हाट विल बी द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअली इन दिस. सो श्योर रोहित, बट एक मैं आपको बहुत क्लैरिफाई करूंगा कि आई विल ओनली टेल यू व्हाट द चार्ट्स आर टेलिंग. So at no point this should be taken as a recommendation. At no point this should be taken as a advice to trade and nothing of that sort. So ठीक है, चार्ट पर अगर आप देखोगे so just like the fin nifty, just like most of the indices that we looked at. सर ये कल के सेशन का जो लो था वो कहीं एक थोड़ा क्रूशल फिबोनाची लेवल से ही बाउंस हुआ है. सो इन केस ऑफ द निफ्टी इट इज बाउंसिंग ऑफ द 50% रिट्रेसमेंट लेवल, करेक्ट. सो अगर मैं ये लेग आपको ड्रॉ करके बताऊं फ्रॉम 14th अगस्त टू 2nd सितंबर, सो उसका एक 50% रिट्रेसमेंट के आसपास से ही गया है. एंड अनलाइक द फिन निफ्टी, निफ्टी में जो है एक विक है एंड एज ऑफ नाउ इट सीम्स टू बी फॉर्मिंग अ हायर हाई, करेक्ट. लोअर विक है एंड एज ऑफ नाउ इट सीम्स टू बी फॉर्मिंग अ हायर हाई. एंड अगर आज के दिन में भी वो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ देन इट विल बी 2 सेशंस ऑफ पॉजिटिव कैंडल्स आफ्टर अ फॉल, which is I think approximately अगर आप देखोगे from its recent highs of 25,333 से लेके जो कल के लो तक का फॉल था that was around 580 points के बाद it is forming two green candles. So overall index की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी seems to be showing strength at this point. And the levels that I'll be looking for again 25,000 के ऊपर ये ब्रीच हुआ है. So आज के दिन में अगर ये 25,000 के ऊपर क्लोज होता है then it will be a bit of a positive sign. But because today is a long lower wick, उसका जो low है which falls around 24,896, so round it off to 24,850. So वो जो level होगा वो मेरे लिए थोड़ा crucial हो जाएगा. And ऊपर में अगर आप simple horizontal ट्रेंड लाइंस वगैरह अगर आप डालोगे
So there is a level of 25,100, वो मेरे लिए important हो जाएगा. So positionally, I have given you two levels on the downside, 24,800, and on the upside, 25,100. And all this analysis will stay true if we have a positive close above 25,000 for the day. And another important thing, this is all spot level, this is not futures. So meanwhile, if you have any queries, those who are attending this session from our WebEx, they can type in the chat box, and those who are attending this session from our YouTube channel, they can simply type in the chat box that if you have any queries related to the FinNifty, Bank Nifty, or the Nifty 50. And more importantly, what I would strongly suggest is हमारा जो कल का वेबिनार है on candles and Fridays के जो भी हमारे educational webinars होते हैं, strictly educational webinars, वो आप definitely attend कीजिए because यहाँ पर see one might argue कि ये इतना strong candle है, then there is a green candle, हम लोग को market समझ में नहीं आ रहा है and all those things, but कहीं ना कहीं candles they have a tendency to talk to you, right? सो वो आपको बता देंगे कि ये पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर यहाँ पर मार्केट की क्या साइकोलॉजी है, मार्केट मार्केट जब मैं बोलूँ मार्केट पार्टिसिपेंट्स की क्या साइकोलॉजी है. सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, व्हाट टू मतलब आपको एक डायरेक्शन समझने में वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. सो डू अटेंड द एजुकेशनल webinars that we conduct, and I'm sure the links will already be shared with you over the mail. So जैसे कि करण ने बताया, that is tomorrow we are having the session on the candlesticks patterns. So I'll just share the link on the chat box so that you can register yourself for the tomorrow session that we are conducting at 4:30 p.m. Also, जैसे कि मैंने starting के session में बोला था that we have conducted this session one on the options basic, that is last Friday, and this coming Friday at 2:30 p.m. we are means conducting the session on the advanced strategy. So that will be covering about the straddles, triangles, condors, calendar spread strategies, entirely majorly strategies that can help you to take the better informed decisions into the market. So I'll just share the link on the chat box so that you can register yourself. So here's the link in the chat box. So here's the link in the chat box so you can register yourself for the tomorrow session and for the Friday session. Meanwhile, अगर किसी को कुछ queries है, then you can directly put in the chat box. So there was a query from the Sunil that I mean Spin Nifty support is at 23,550 and the resistance is at 23,750 on the basis of Fibonacci. So if you can just reconfirm on these levels, Karan. Sure, sure, sure. Yeah, so I'm not sure आप कौन सा फिबोनाची प्लॉट करे हो, कहाँ से प्लॉट करे हो, बिकॉज फिबोनाची में एज आई मेंशन जब मैंने फिबोनाची प्लॉट किया आई हैड 2 पॉइंट्स, स्टार्ट पॉइंट एंड एन एंड पॉइंट. सो एट दिस पॉइंट आई एम नॉट श्योर कि आप कहाँ से फिबोनाची प्लॉट कर रहे हो, बट ब्रॉडली अगर आप देखो टेक्निकली मुझे लग रहा है कि जो 550 का आपका लेवल था दैट आल्सो कोलाइड्स, दैट आल्सो falls in line with today's low, correct? And जो आपका resistance है that is a notch below today's high. So broadly आप देख रहे हो कि आज के दिन का range जो है वो important होगा, and if it goes above or below that we might see direction, which I agree based on what the charts are telling. So we are having one question from this YouTube channel also that 23,650 or 23,750.
from Joseph, Uh, as in, the particular levels. see, for resistance, it has to be 23,800. I'm talking about For the intraday chart. for intraday chart. Okay. Okay. For intraday, if you see 650 पर हमें थोड़ा rejection आते हुए दिखाई दे रहा है, and as of now it is attempting to go above it. So once 23 650, bear in mind this is spot. So spot में since we've seen the recovery at around 10 o'clock, 23 650 का जो level है वो breach हुआ नहीं है. Right now we are very close to breaking, I mean testing that level. 649 पर है हम लोग. And अभी भी अगर आप real time अगर आप charts देख रहे हो, so you can see the struggle that the FINNIFTY spot is going to break above 23 650. Because as of now, फिर निफ्टी 24 सितंबर का अगर फ्यूचर देखा जाए, then that is around this 23,724. Hmm. Right now it is trading. So, but in the intraday, as you mentioned correctly, It's on spot. it's on spot. All the analysis that we talk about, it's always on spot because आपका जो भी derivative products है that will move based on the movement of the underlying. So underlying analyze करना always is more logical. Yeah, and अगर मैं futures का भी chart देखूँ तो that level falls around 23 740 23 750. So if anybody has any query, please put it in the chat box, or else we'll end the session. We'll keep the session open for another 60 seconds or so. And इतने में अगर किसी को कुछ query है, please put it in the chat box. We'll take it up, or we'll go ahead and end the session. I think Karan, we are not having any queries. So I've already shared the link on the chat box. So do register yourself for the tomorrow session. And with this, we'd like to end the session here. And thank you so much everyone for attending today's session. And if you have any queries and anything, then I'll just drop the email ID also in the chat box so that you can mail us. Means if you'll be having any queries. So it's a ring.academy@accesssecurities.in. So once again, thank you all for attending today's session. Thank you so much.